The Browning version, written by Terence Rattigan. Terence Rattigan's written chapter, the Browning version, it presents two contrasting school teachers. One is Mr. Frank, and another teacher is there, Mr. Crocker Harris. They are very different in their age, in their behavior, in their devotion to their profession. Frank, he is young, more social, while Mr. Crocker Harris, he is middle-aged and reserved person. Frank, teacher, there are many lacks, involvement and for the devotion. Crocker Harris is feared as a hard taskmaster. The one act play also presents the hidden rivalry among teachers. Rivalry means opposite, they are opposite to each other. It also describes the reaction of Taplow, who is student of Mr. Crocker Harris. This is an excerpt from the Browning version. जो Browning version है उसका एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में लिया गया है. The scene is set in a school, means the scene has been created in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Means two teachers we have described in the chapter, Frank who is young and Crocker Harris who is middle-aged. Both are teachers. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. Taplow is a student. He is a student of Mr. Crocker Harris. His age is 16 and that day he had come in the school for doing his extra homework. But the letter has not yet arrived. Lekin his teacher was not there and Frank finds Taplow waiting. And another teacher who has been described here, Frank, who found Taplow that he is waiting for someone. There is a conversation now in coming lines between Frank and Taplow. Frank, do I know you? Taplow, no sir. Frank, what's your name? Taplow replied, his name is Taplow. Frank, Taplow, no, I don't. I don't know. You are not a scientist, I gathered. Means as per my thinking is there, you are not the student of science. जहाँ तक मुझे याद है, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो. Taplow, no sir. I am still in the lower fifth. I can't specialize until next term. That's not say if I have got my review all right. He again told Frank that now he is studying in 5th standard and he didn't know that he could be removed for the next class or not. उसने ये कहा कि भी मैं अभी भी 5th क्लास में हूँ और मुझे नहीं पता कि भी आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए मैं जो सब्जेक्ट मीन्स आपका ले पाऊंगा या नहीं, और क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि भाई मैं आगे की क्लास में मतलब टीचर जो है वो मुझे आप आगे की क्लास में भी प्रमोट करेंगे या नहीं. मीन्स देयर इज नथिंग दैट he can tell regarding his promoted class, means for the 6th class, so that he can become their science student. Means in these lines, there is a story of two school teachers and a student named Taplow. Mr. Crocker Harris, we know that he is a middle-aged teacher, while Mr. Frank is a young one, and Taplow is a student of lower 5th class. He is a boy of 16. Both the teachers are providing here a contrast. They have only one thing in common, means
They just belong to the same school. Frank said to Taplo, don't you know if you have got you removed? आपको नहीं पता कि भी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकते हैं या नहीं? Taplo, no sir. Mr. Crocker Harris doesn't tell us the results like the other teachers. He had doubt because he knew that his teacher, Mr. Crocker Harris, he never will tell him about the removal of for the next class, like the other teachers used to tell him. Means वो कहता है कि भी जो क्रोकर हैरिस है वो दूसरे टीचर्स की तरह रिजल्ट से पहले ही उस बच्चे को नहीं बताते कि भी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाओगे या नहीं. फ्रैंक, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्यों नहीं बता पाते वो आपको? Taplo, well, you know, he is like sir. Then he defined his teacher that Frank also knew all these things regarding his teacher. तो यही कहते हैं आपको तो सारी चीजों का पता है सर. Frank, I believe there is a rule that from result should not be announced by the headmaster on the last day of term. Frank told Taplo that there is a rule for the school that if a teacher will announce the result after announcing the result of the headmaster. कोई भी टीचर तब तक रिजल्ट नहीं बताएगा जब तक लास्ट डे वाले दिन अगर जो अनाउंसमेंट है वो हेड टीचर ही करता रिजल्ट की, तब तक टीचर्स किसी को कुछ नहीं बताती. Taplo replied, yes sir. But who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? लेकिन वो कहता है नहीं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान कौन देता है? एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस के. मिस्टर क्रोकर हैरिस के सिवाय कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करता. दैट द रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड ओनली बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल एट द लास्ट डे. फ्रैंक, आई डोंट थिंक सो. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. आई एडमिट बट दैट इज नो क्राइटेरिया. आई एडमिट दैट आई आल्सो डोंट पे अटेंशन बट this is not any criteria. ये कोई criteria नहीं है. So you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? Then again Frank told him that he had to wait until tomorrow to know that he would remove for the class or not. तब फ्रैंक ये कहते हैं कि भी आपको कल तक इस अपने रिजल्ट के लिए कल तक वेट करना पड़ेगा. क्या ऐसा नहीं है? Taplo, yes sir. You are right. Frank, supposing the answer is favorable, what then? Suppose if you will be pass, then what will be done? अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हारा क्या डिसीजन रहेगा? Oh, of course, साइंस लेंगे सर. Frank, we get all the slackers. Frank थोड़ा सा sad हो जाता है because he is a teacher and like Taplo, he thinks that he is not a good student, so he said that only slackers, all the slackers will be in my class. Means all the students, those who are very lazy. Slackers means lazy, कामचोर. जो कामचोर है वो सभी साइंस लेते हैं, ऐसा उनका मानना था. Taplo, I am extremely interested in sir, but Taplo उसको कहता है कि भी that he is really interested in science. He deserves for the science and he always try to get science. Frank, are you? I am not. You are interested? Oh, that's good. But I am being a teacher of the science particularly, I am not interested in science. Not at least in the science I have to teach. कम से कम साइंस में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि साइंस मुझे पढ़ाना पड़ता है, मैं इसका टीचर हूँ, फिर भी मेरे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है. Frank, are you? I am not. Okay. Frank, Taplo, well anyway sir, it is a good deal more exciting than this month. Taplo कहता है, all right sir, you can be right, but science is better than this month. Means he was having a book and by indicating at the book he says that science is good comparatively this book. जो उसके पास बुक थी उसकी ओर पॉइंट आउट करता हुआ कहता है कम से कम इस बुक से तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं.
Muck means useless. Frank, what is this muck? तो ये useless चीज क्या है? Which subject book you are having? Tableau Aeschylus, sir. The Agamemnon. Aeschylus means a great Greek dramatist हुए हैं, उसको Aeschylus कहा गया है. और Agamemnon a play writer means Agamemnon जो प्ले रिटन किया गया बाय एसिलियस. एसिलियस ग्रीक ड्रामेटिस्ट ने एक प्ले रिटन किया था, उसका नाम था एगमेमनन. और इसी बुक की ओर इंडिकेट करते हुए टेप्लो कहता है कि दिस इज अ वेरी यूजलेस थिंग एंड साइंस इज कंपैरेटिवली मोर इंटरेस्टिंग देन दिस बुक. Frank, and you considered view is that Agamemnon is book. Then Frank दोबारा से कन्विंस करते हैं कि भी आप इस चीज को कंसिडर मीन्स डिसाइड कर लिया आपने दैट Agamemnon book is very muck useless thing. Tableau, well, no sir, no sir, no, isn't so, ऐसा नहीं है. I don't think the play is muck exactly. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो play है वो exactly useless है. I suppose in a way it is a rather good plot. लेकिन मैं मानता हूँ it could be a rather good plot. ये अच्छा plot हो सकता था, एक अच्छा नाटक हो सकता था. Really a wife murdering her husband at dinner. एक पत्नी इसमें अपने हस्बैंड को मार देती है और बेशक. And it only meant the way it is taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. क्योंकि बहुत सारी जिस no doubt plot is good, drama is good, because here is mentioned that a wife murders her husband, but the way by which it is taught, लेकिन जो way जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, that is not up to the point. वो चीज अच्छी नहीं है, because we have to read about lot of Greek words. में बहुत सारे Greek words पढ़ाए जाते हैं एक साथ, और अगर उनको पढ़ने में अगर कोई गलती हो जाती है, then we have to write again that word 50 times. तो लगभग हमें उस word को 50 times लिखना पड़ता है. It means that is very critical for these students, that if they found any difficulty to read or write, then automatically they have to repeat it 50 times in written form. Frank, you should a little bit tableau. So वो कहते हैं कि भी आप थोड़ा सा bitter means unpleasant. You are looking unpleasant, displeased बहुत, मतलब खुश नजर नहीं आ रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है. Means Mr. Crocker Harris and Frank, both teachers are mentioned. That one teacher is the Crocker Harris, he always follows the rules, but Frank, he doesn't believe in observing formalities. He cares very little regarding rules and regulation. Mr. Crocker Harris follows them very strictly, and in this regard he is different from other teachers. He never leaks out the results, but no doubt Tableau also liked his season, and then he asked that in which class he is reading. Then Tableau told that now he is in 5th, and after the removal, then definitely he will get science. He also compared here science and another book, that is Agamemnon. Frank, you sound a little bit at Tableau. Oh, I'm rather sir. हाँ मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा unpleasant लगा हुआ, थोड़ा मैं खुश नहीं हूँ. Frank tapped in. Oh, Tableau. No sir, extra work. I'm here not to read that book, but I'm here for completing my work. उसने कहा कि मैं यहाँ पे वो बुक पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, बट मुझे अपना काम कंप्लीट करना, एक्स्ट्रा वर्क जो मुझे गिवन है, सर ने जो मुझे दे रखा है वही कंप्लीट करना है. Frank, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल. कल रिजल्ट आने वाला है, टुडे इज द लास्ट डे, तो आज आपका कौन सा एक्स्ट्रा वर्क करना आपको? Tableau, yes sir, and I might be playing golf. हाँ जी, I have to complete my work, otherwise by this time I will have to be playing golf. तो मैं इस टाइम golf खेल रहा होता अगर ऐसा ना होता तो. You would think he would have enough to do anyway himself. तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि उनके पास खुद करने के लिए काफी काम हो गया होगा? Considering he is leaving tomorrow for good, but oh no. आपको तो ये भी नहीं पता है कि भी आपके जो टीचर हैं
वो आपको कल पास करने वाले हैं या नहीं। Oh, I missed a day last week when I was ill, so there I am and look at the weather scene. Taplo told his teacher why he was there. He told him that one day he was absent from the school because he was ill at that day and he couldn't come to the school. That's why his teachers uh, directed him to complete that day work before removal. And then he changed his topic and asked him that he please look at the weather scene. Bad luck. फ्रैंक उसको कहता नहीं तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, अभी भी आपके लिए कंफर्टेबल थिंग हो सकता है। यू आर प्रिटेंडिंग टू गेट यू रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय एंड टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन फिर भी फ्रैंक उसी बात को घुमा फिरा के पूछते हैं कि नहीं, आपका अच्छा लक हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने वर्क को कंपनसेट करने के लिए, उस पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए आज आप स्कूल में आए हैं, तो डेफिनेटली क्रोकर हैरिस आपके इस काम से खुश होगा और आपको कल पक्का अगली क्लास में प्रमोट कर देगा। आपके फेवर में ये रिजल्ट होगा। टैपलो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। वो कहता नहीं, मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट द टीचर विल रिमूव मी। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, राइट? हाँ, इट कुड बी ट्रू in the matter of other teachers because they can pass their students if they will complete their work, but it never happened with Crocker Harris. They just wouldn't dare not to give a chap a reward after his taking extra work. But as per Crocker Harris is considered, he never will give the reward, means he never pass his students if they stay at the school for completing their work. But those sorts of rules doesn't apply to the Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he would give me a reward, and do you know what he said, sir? तभी जो टैपलो है वो अपने टीचर को, फ्रैंक को बताते कि मैंने कल मिस्टर क्रोकर हैरिस से पूछा भी था, क्या आप मुझे कल पास कर देंगे? तो आप जानते हैं उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, मीन्स that could be something different as far as the ordinary teachers are considered. Frank, no, but I don't know about what he could have given you the reply. Taplo, imitating a very gentle, rather throaty voice. Throaty means that comes out of heavy throat, जो भारी गले से फटी हुई आवाज निकलती है, उसी टोन में उसने कहा, My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve. No less and certainly no more. तब टैपलो को उन्हीं की वॉइस की कॉपी करता हुआ कहते हैं, माय डियर टैपलो, जितना आप डिजर्व करते हैं मैंने आपको उतना ही मार्क्स दिया है, ना कम ना ज्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, बट आपको पता होना चाहिए वो मेरे मार्क्स भी काट सकते हैं, मुझे मार्क्स भी कम दे सकते हैं, रादर देन अब ज्यादा देने की बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा में टाइम में काम करना पड़ रहा है, इसीलिए वो मेरे मार्क्स भी इसके लिए कट डाउन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमंस, कहने का मतलब है मुश्किल से ही उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हैं। हार्डली मीन्स स्केर्सली, मुश्किल से। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन क्वालिटीज हियर रेफर्ड। He breaks off quickly. Sorry sir, have I gone too far? Then he apologized to the teacher and asked him that he had said about Mr. Crocker Harris a lot of things, so he regret about his mistakes. Frank, yes, must have fun. हाँ, बहुत ज्यादा आप कह गए हो। टैपलो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड। इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मतलब सॉरी फील कर रहा हूँ। कैरीड ऑफ मीन्स यहाँ पर स्वेप्ट हुए, मीन्स मैं भावनाओं में बह गया था, मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। फ्रैंक, एविडेंटली, ये तो क्लियर है। He picks up a newspaper and opens it. Oh, Taplo. Taplo then replied, yes sir. Frank, what was the Crocker Harris said to you? Just repeat it, would you? Means he asked that what he had said, could he please repeat it? वो कहता है कि आप इस बात को रिपीट कर सकते हो जो आपको उसने कहा है। टैपलो, माय डियर टैपलो,
I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. जब टेप्लो दोबारा उस बात को रिपीट करता हुआ कहता है कि मैंने आपको ना तो ज्यादा ना ही कम, जितना आप डिजर्व करते मैंने आपको उतना ही मार्क्स दिया है। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, थोड़ा सा इस बात की ओर हार्श मीन्स हार्ड रूप में देखता है, कठोरता से देखता है। नॉट इन द लिस्ट लाइक यू, थोड़ा सा भी उसके जैसा नहीं। रीड योर नाइस एसेस एंड बी क्वाइट, बस तुम अपनी बुक को पढ़ो और चुप रहिए। बिकॉज वो उनकी इस बात को लेकर कन्विंस नहीं होता है कि भी जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो इस बात से एग्री होते हैं कि भी अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको मार्क्स दे देंगे। नहीं, it was opposite in the case of Mr. Crocker Harris, because he was thinking that a child must deserve the thing which he has written in the exam, no more, less and no more, ना ज्यादा देना चाहिए ना ही कम देना चाहिए। because टीचर जो है he always used to think about the students, then how much they could get, and he never tell about their results because he thought that he could pass easily if that particular child would work or would do their work honestly, definitely he could remove. So this is the chapter, beta. I hope you have to understand.